Hello students, welcome back once again. Student, this is the second part of the topic menstrual cycle. Clear? Last time I have explained you about the various events that takes place or various phases of the menstrual cycle. Now here I am just going to explain you the chart which is given in front of you. This is the figure number 3.9 of NCERT, page number 50 पे स्टूडेंट ये दिया हुआ है. क्लियर? सो आई हैव टू एक्सप्लेन. क्लियर? स्पेशली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लेवल ऑफ द ओवेरियन हार्मोन एज वेल एज द पिट्यूटरी हार्मोन. क्लियर? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर? सो स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हेन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस and the level of estrogen decreases, then what happens? So this decreased level of progesterone and estrogen stimulates the hypothalamus. So in turn hypothalamus starts secreting GnRH. क्या secrete करता है student? GnRH, gonadotropic releasing hormone, and in turn GnRH stimulates anterior pituitary, clear, to release FSH and LH, these two hormone. Clear? FSH and LH. Now what happens to LH? आप देखोगे स्टूडेंट, LH you can say in the first and second phase, यानी menstrual phase और follicular phase में the level of FSH, you can say it slowly now increases. Clear? आप देखोगे धीरे धीरे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है. क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ व्हाट? FSH, द मैच्योरेशन ऑफ द you can say follicles takes place, primary to secondary to tertiary, and then finally mature Graafian follicle is formed. कब? जब FSH का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है. क्लियर? एट द सेम टाइम द लेवल ऑफ LH ऑल्सो इंक्रीजेस. क्लियर? FSH की वजह से क्या हुआ? व्हाट हैपेंस टू FSH? यानी ये फॉलिकल मैच्योर हो गई. नाउ द प्राइमरी फॉलिकल इट इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. क्लियर स्टूडेंट? And now the cells of the Graafian follicle or the mature follicle or the follicular cells, they secretes what? They secretes a very important hormone, that is the estrogen. This is the ovarian hormone. आप देखो इसका लेवल भी बढ़ रहा है जैसे जैसे ये Graafian follicle mature हो रही है. क्लियर? The level of estrogen also rises. क्लियर? अब estrogen का लेवल भी धीरे धीरे अब बढ़ रहा है. Clear? So because of the increased level of estrogen, the pre-ruptured, you can say the degenerated endometrium, it regenerates. अब देखो it regenerates, यहाँ पे ये regenerate हो रही है. Clear? This you can say with the increase in the level of estrogen, this wall regenerates, endometrial wall regenerates. This is the function of what? Estrogen. आप पढ़े हो estrogen, it helps in the formation of or regeneration of the endometrial wall, as well as it helps in the development of the secondary sexual character. Clear student? तो यहाँ पे आपने देखा कि follicular phase में estrogen का लेवल धीरे धीरे अब वो बढ़ रहा है. Clear? क्यों? क्योंकि estrogen is secreted by the follicular cells. Clear? And what happens on the mid of the cycle, that is on the 14th day of the cycle, when ovulation takes place? Clear? At that time the concentration of LH is maximum and this is called as the LH surge. LH का concentration, अब blue line देखो ये LH को show कर रहा है, इसका concentration इसमें बहुत ज़्यादा होता है. And because of the increased concentration, the increased LH concentration, the Graafian follicle gets ruptured and ovulation takes place. Clear? अब क्या होगा स्टूडेंट? अब तो follicular cells degenerate हो रही है धीरे धीरे. अब एस्ट्रोजन का लेवल इट कम्स डाउन. क्लियर? आप देखो एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, धीरे धीरे इट कम्स डाउन. क्लियर? इट कम्स डाउन, इट slowly comes down. Clear? And now this ruptured Graafian follicle, it is now converted into corpus luteum. And then what happens? Corpus luteum is the endocrine part of ovary.
एंड एट दैट टाइम यू कैन से द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम था, क्लियर, यानी फॉलिकुलर फेज में लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज डाउन, क्लियर, अब वो धीरे धीरे सडनली इंक्रीजेस, क्लियर, विद द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम यू कैन से द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेस। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अब इंक्रीज करता है, क्लियर। तो ये आपने देखा है स्टूडेंट, कब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज किया, जब कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट पूरा हो गया, क्लियर। देन व्हाट हैपेंस आफ्टर ओव्यूलेशन, सडनली आफ्टर ओव्यूलेशन, क्लियर, ओव्यूलेशन के बाद व्हाट हैपेंस, द लेवल ऑफ LH कम्स डाउन, अगेन द लेवल ऑफ LH इट कम्स डाउन, क्लियर, अब LH का लेवल फिर से कम हो जाता है, क्लियर। और आप देखोगे अब फॉलिकुलर जो हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लेवल भी क्या है, धीरे धीरे कम हो जाता है। कब, अब जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, तब इन दोनों का लेवल कम हो जाता है, क्लियर। इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर, एंड इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अगेन दे इन्फॉर्म द hypothalamus, clear, and ultimately hypothalamus order the pituitary to stop the secretion of FSH and LH, clear, यानी एस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही बढ़ा, क्लियर, सो the hypothalamus it orders the anterior pituitary to stop the secretion of which hormone, LH and FSH, और इसका लेवल धीरे धीरे फिर से it comes down, clear student। So this is you can say the events, clear, that takes place in the ovary, clear, as well as in the pituitary, clear। And now what happens after ovulation, when progesterone level increases, it maintains the endometrial wall, and the level you can say, and the level of you can say estrogen again it starts increasing, clear, both estrogen and progesterone, these two maintain the endometrial wall, clear student। So this is about the chart, clear, all the details, all the phases I have already discussed, clear। The first phase that is the menstrual phase, ये है मैंने आपको डिस्कस पहले ही कर दिया था लास्ट वीडियो में। देन ओव्यूलेटरी फेज, थर्ड फेज इज द ओव्यूलेटरी फेज, उससे पहले 6 to 13 डेज को दिस इज कॉल्ड एज द फॉलिकुलर फेज, इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, यू कैन इजीली सी, क्लियर स्टूडेंट। और उसके बाद फिर ल्यूटियल फेज, द 14th डे के बाद ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज आता है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, क्लियर। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन व्हाट हैपेंस, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, क्लियर, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाती है, क्लियर, एंड द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कम्स डाउन। आप देखो ये रेड वाली लाइन, अब ये लेवल धीरे से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया, क्लियर। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो रहा है, यू कैन सी हियर द एंडोमेट्रियल वॉल स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग, क्लियर, endometrial wall अब starts degenerating, यानी for the maintenance of the endometrial wall the concentration of progesterone and the estrogen should be high, clear, यानी you can say for maintenance of the pregnancy estrogen and the progesterone level should be high, clear। अब जैसे ये level down हुआ, ये endometrium की wall it degenerates, clear, and this is the beginning of the you can say new cycle, clear student। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में चार्ट के बारे में समझाया। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस चार्ट, फिगर 3.9 पेज नंबर 50 ऑफ NCERT, क्लियर। अब मैं ब्रीफ में एक आपको बता दूं छोटा सा हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है ना, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द oogenesis यू कैन से, और यू कैन से दिस menstrual cycle, क्लियर। सो व्हेन द you can say hypothalamus is stimulated, clear, it secretes GnRH, clear student। ये क्या secrete करेगा, GnRH secrete करता है, clear। let me tell you, यानी hypothalamus it secretes GnRH, gonadotropin releasing hormone, this stimulates
stimulates anterior pituitary and then anterior pituitary starts secreting what? Two important hormone, LH, luteinizing hormone, and FSH. Clear, student? Now what is the function of LH? You already know. LH stimulates the Graafian follicle, clear, or formation of corpus luteum. Maturation of Graafian follicle यानी stimulates formation of Graafian follicle, clear. और दूसरी चीज क्या करता है ये? ग्राफियन फॉलिकल को तो मैच्योर करने में हेल्प कर दिया, उसके बाद क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन. This you already know, clear. And progesterone it maintains the endometrium and inhibit the secretion of LH. यानी ये प्रोजेस्टेरॉन दो काम करेगा, inhibits the secretion of LH, clear, and maintains endometrium, clear student. और उधर FSH का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH? क्लियर. FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये वाले प्रोसेस को कंटिन्यू कराएगा, हेल्पिंग मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स. और फिर नाउ दीज फॉलिकुलर सेल्स secretes estrogen, clear. Now they will secrete what? They will secrete estrogen. ये estrogen को secrete करेंगे. और estrogen का function आप जानते हो, regeneration of the endometrium as well as the control of the secondary sexual characters in female. Clear student? So this is all about the menstrual cycle. I hope that you have liked this video. You are now able to understand the menstrual cycle nicely. Clear. In case of any doubt, you can repeat this video, you can see this video, you can watch this video again and again. Clear student? In case of any doubt, you can approach me directly on WhatsApp. Clear? So enjoy your day. Thank you. Have a nice day. To understand the various ways that medical science can assist reproduction, it is important to understand how the reproductive system functions in both sexes, because the cause of infertility often lies equally with both men and women. The main players in the female reproductive cycle are the pituitary gland, the ovaries, and the uterus. Their activities are closely coordinated. Each month, one or other ovary releases a single egg, an event known as ovulation. It is brought about by a series of complex interactions between the pituitary gland, the ovaries, and the uterus. The pituitary gland is itself under the control of this small area of the brain known as the hypothalamus. A new menstrual cycle begins when the nerve cells of this center secrete a hormone called gonadotrophin-releasing hormone, GnRH, into the network of blood vessels which surrounds the pituitary gland. Stimulated by pulses of gonadotrophin-releasing hormone, cells in the pituitary gland secrete another hormone, follicle-stimulating hormone or FSH. FSH travels in the bloodstream, reaching the ovaries. There it stimulates the formation and growth of an ovarian follicle in one or other ovary. The follicle consists of an egg, a number of surrounding cells which secrete estrogen hormones, and fluid. FSH helps the egg to mature and prepares it for release.
As the follicle matures, the hypothalamus increases secretion of GnRH. This in turn stimulates the pituitary to secrete a second hormone which acts on the ovary. This is luteinizing hormone, or LH. Toward the middle of the cycle, there is a sudden peak in the blood level of LH. This acts as the trigger for ovulation. Within minutes of its release, the egg is guided by suction through the fringed opening of the outer end of the fallopian tube, starting it on a journey which will take 5 or 6 days as it passes down the tube and finally reaches the cavity of the uterus. Meanwhile, after the follicle ruptures, it is converted into this yellowish body known as the corpus luteum. Cells of the corpus luteum secrete the hormone progesterone, which brings about important changes in the lining of the uterus, preparing it for possible pregnancy. In fact, the lining of the uterus, known as the endometrium, undergoes changes in response to hormone levels during the cycle. In the first half of the cycle, known as the follicular phase, the developing follicle secretes increasing amounts of estrogen hormone, which encourages regeneration of the endometrium. After ovulation, there are important changes in the endometrium, aimed at making it suitable to receive a fertilized egg. These changes are brought about by a secretion of progesterone from the corpus luteum. The secretion of progesterone is maintained for several days, but if the egg is not fertilized in that time, the corpus luteum withers, and falling levels of progesterone and estrogen trigger the shedding of the uterine lining as the menstrual flow. The cycle then starts again. But if the egg is fertilized, no menstruation occurs, as the corpus luteum continues to function, secreting progesterone during the first 3 months of the pregnancy. Thereafter, numerous changes occur to support the developing embryo.